Okay. Okay. Let us execute a theory on a function. Let's say if I want to make the graph of the function, and this is a function which is defined from R to R, and let us make the graph of the, like every time I do this question, every time I take this curve sketching part, I take a graph, and from that graph you'll be able to understand everything. So this is what I do usually in the classes also. This is what I'm going to do here as well. So I'm going to take the most basic graph that you do and you quite many times encounter, if even if you're in research, if you're even if you're not in research, like even if you're doing MSc or otherwise you're doing PhDs, mostly the experimental data are to be fitted by Gaussians or Lorentzian or all those things. So in any case, this particular thing, this particular graph would solve much of your problems. Okay. Now another thing that one needs to understand, एक चीज मैंने बोली थी even or odd की. So what does it mean? So if my function is even, what does it mean? If I say that my function is even, that implies if I replace my x by minus x, my function would remain x. So here my function is invariant with respect to a sign change. Okay, sign change. So obviously you will not argue that why not on root over x. I'm not saying that every function has to be even or odd function. Only if it satisfies some sort of domain definition. So if my function is even, this will be the case. See, what does it mean? It means that if I'm plotting my graph, if I'm plotting my graph, and always understand y is equal to f of x. Like in calculus, we write function of x. In coordinate geometry, we write that as like our y function, like y is equal to f of x. Now you see, if I write y is equal to f of x, and if I want to simply say that how would my function look like? So it means that if x comma y is there, अगर function even है, what does it mean? That f of minus x would be defined and f of minus x would again be f of x only. So if I say that x comma y is there, that is, if I want to say that my x comma fx is there, then indeed x comma minus fx would also be there. Sorry, minus x comma fx would also be there. So if you see that if x comma y is there, then minus x comma y would also be there. Is that clear or is that not clear? वापस समझो, देखो even function का मतलब क्या है? Even function means if my function is invariant with respect to the sign change. So it implies that if I replace my x by minus x, my function would remain f of x. Okay, my function would remain f of x only. So what does it mean? It means that if I'm making a graph which is even, if the point x comma y is there, and x comma y I'm writing as x comma f of x. So all these points are there on the graph. Let's say all these points are there. Then minus x means what? जहां जितना तुम यहाँ पर उतना तुम यहाँ पर भी होने चाहिए. And at minus x, what would be the value? Again, the value would be y only. Are you getting my point? So what does it mean? It means अगर यहाँ पे इस तरीके से कुछ points हैं, तो यहाँ पर भी इस तरीके के कुछ points होंगे. So what does it imply? It implies your graph would be symmetric about y-axis. So for even function, for even functions, the graph is symmetric about y-axis. So that would make our life easy. Why? Because once you make your graph along for all x greater than 0, the same graph you can copy for all x less than 0. So obviously this is an even function. Initially, I will make the graph like from very basics, from very scratch only. I'm not going to use the function like that is an even function or odd function. But in examination, you can take that as a benefit that other even function and draw the graph for all x greater than 0. Same graph you have to draw for all x less than 0. The same graph taking a symmetry about this axis. So you have to take it as a mirror. जैसा तुम्हारा यहाँ plot है, same to same वहाँ plot करो. Is that clear or is that not clear? So when I'm saying that function is even, it implies that if x comma y are there, then obviously minus x comma y would also be there. Why only y? Because f of minus x is f of x. So if you write f of x as y, what does it imply? It implies that at minus x also your value of function is y only, f of x only. Is that clear or is that not clear? So your function would be symmetric about y-axis. Similarly, if you see that odd function, so whenever you consider an odd function, if I'm saying that my function is odd, it implies your f of minus x would be minus fx. So if I write my f of x as y, it implies if I'm saying that my x comma y is there,
then minus x comma minus y would be there. So your function would be symmetric about origin. So odd functions are symmetric about origin. ये दो चीजें याद रखो. थोड़ा सा जो याद रखने का है, एटलीस्ट टिल स्टैंडर्ड 11th और 12th, whatever, I don't know, at least remember some formula on the limits of the function. At least remember those formulas. So that formula ही नहीं पता चल रहा है, then how would you find limits? And if you cannot find limits, how would you find the limiting tendencies at infinity or plus minus infinity at zeros and all those stuff? Is that clear or is that not clear? ये चीज समझ में आई? सो देखो, अब अपन चलते हैं इसी ग्राफ पे, एफ एक्स इक्वल टू ई की पावर माइनस. I'm not going to take much of your time. I hope I'll be able to finish this entire thing in one lecture only, because all I need to give you is a hint, and all those things are time and again going to be repeated. Don't worry about it. So if I want to make the graph of e की power minus x square, the first thing that you need to understand is, let us first find let us first find the behavior at plus minus infinity. Let us first find the behavior at. अच्छा, एक चीज मैं तुम बना के बता रहा हूँ. एक्सपोनेंशियल फंक्शन के तुम प्लॉट्स यहाँ बना लेते हैं पहले, जैसे कि तुम अगर नहीं जानते हो, देन यू विल बी एबल टू नो. सो दिस इज हाउ योर एक्सपोनेंशियल फंक्शन बिहेव्स. You can see that your exponential function is never negative. So you're along x-axis, you can see that your graph will always lie above the x-axis. It is the graph for all a greater than 1. Like exponential को मतलब हमेशा e की power x ही नहीं होता. If you write 2 की power x, then also it is an exponential function. Okay, understand the point. So if I'm writing the graph of a की power x, this is how it is going to be. And if I want to write a की power x, if a lies between 0 and 1, then the graph would look like this. This will be a decreasing function. These are like fundamental curves that one needs to understand. Is that clear? Is that not clear? Okay. So now let us first find the limiting behavior at plus minus infinity. I'll go very slow so that you people don't get. So देखो, limit x tends to infinity e की power minus x square. Does anybody has got any answers to it? अगर सीधे बोल सकते हो तो बताओ. What it would be? कहाँ गई कृति? कहाँ गई कृति? बताएगी. 0 only. 0 only. कृति क्या होगा बेटा? So okay, if you don't remember, fine. थोड़ा ध्यान से देखो. अगर मैं कहता हूं e की पावर माइनस एक्स, थोड़ा ध्यान से देखो, तो e की पावर माइनस एक्स क्या होगा? कैन आई नॉट राइट e की पावर माइनस एक्स एज 1 अपॉन e की होल पावर x? एंड व्हाट इज 1 अपॉन e? 1 अपॉन e इज बिटवीन 0 एंड 1 ओनली. तो ग्राफ कैसा बनता है e की पावर माइनस एक्स का? ऐसे. इज दैट क्लियर? अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि 1 अपॉन e की पावर x बोलूं, चाहे e की पावर माइनस एक्स बोलूं, बात एक ही है. तो देखो, e की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा बन रहा है? ऐसे. जैसे जैसे आप इन्फिनिटी की तरफ भाग रहे हो, वैसे वैसे आपका ग्राफ कहाँ जा रहा है? 0 की तरफ. ग्राफ को इधर देखो, मतलब फंक्शनल की वैल्यूज आप हमेशा कहाँ देखोगे? वाई एक्सिस पे देखोगे. दिस इज समथिंग दैट आई फाउंड इन स्टूडेंट्स, दे डोंट इवन अंडरस्टैंड कि कहाँ क्या देखना है. तो देखो, एक्स एक्सिस में जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना हम लोग, इफ आई एम प्रोग्रेसिंग अलोंग एक्स एक्सिस, माय फंक्शन इज ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग ड्रॉपिंग. फंक्शन ड्रॉपिंग मतलब यहाँ देखो, यहाँ वैल्यूज देखी जाती है. यू कैन सी दैट योर value of the function is decreasing. Like value of the function is decreasing towards 0. Is that clear or is that not clear? Or should I make it all over again? वापस देखते हैं. ठीक है, देखो. So if I want to make the graph of e की power minus x, how it would be? देखो, ऐसा कुछ होगा. ओके. सो जैसे जैसे तुम्हारा x बढ़ रहा है, as your x is increasing, your function is going towards, and it will never oppose. This is an asymptotic graph. So what you can see that your x, as your x is increasing, your y that I'm drawing on the red. So you can see that your y is decreasing, and where it is decreasing towards 0. So always remember that limit x tends to infinity, e की power minus x is 0. So this would be 0, because this x का तो और भी कबाड़ा हो गया, तो x स्क्वायर हो गया. अगर ऐसे नहीं समझ में आता, बिल्कुल बच्चों से समझ में आता है, take x square is equals to y. Take x square equal to y. Now, if your x tends to infinity, obviously your x square will also tend to infinity. That implies your y would tend to infinity. That implies limit y tends to infinity, e की power minus y. So obviously it will go to 0. Is that clear?
And similarly, if you find x tends to minus infinity, so if your x is tending to minus infinity, it implies your x square tends to infinity, it implies your y tends to infinity. Again, limit y tends to infinity, e की power minus y, this will go towards 0. So in any case, as x tends to plus minus infinity, your e की power minus x square would anyway go towards 0. Is that clear or not clear? So this is how your function would behave. Second, try to find if there are some intercepts on the x-axis or not. So intercepts on x-axis and y-axis. So how to find intercepts on x-axis and y-axis? If you're intercepting on x-axis, that implies your y-coordinate should be 0. And if you're intercepting on x-axis, then it implies your x-coordinate should be 0. Okay, intercept means what? Where your function is cutting. So if your function is cutting from x along it on any point in x-axis or any point in y-axis, this is something that you need to check. So what does it imply? It implies that y should be equal to 0. If y is equal to 0, it implies e की power minus x square should be equal to 0. This is never possible. Always remember that exponential function is always positive. So it is never going to cut y equal to 0. What is y equal to 0? Y equal to 0 means your x-axis. So it is never going to cut x-axis. Although in the limiting case, you can see that your function is approaching towards y-axis, x-axis, but it will never cut. E की power minus x square is tending to 0, not exact 0. Okay, it is tending to 0 means it is going to be as close as possible to the x-axis, but it's not going to cut the x-axis anyway. Why? Because had it cut the x-axis, it means your y would have been 0. And if y would have been 0, that implies your e की power minus x square would be 0. That is never the case. Exponential function is always positive. If you don't want to believe on me, take log both sides. Log 0 is not defined. Okay, any way out. Any way out if you want to find. Okay, on y-axis, where it would cut only if x is 0. X is 0 means e की power minus 0, that is 1. So at y-axis, you will have this point 0, you will have the point 0. Is that clear? Till now, everything is clear. Second point, intercepts on the x-axis and y-axis. Done? Domain, obviously, you know that your exponential is defined for all x. See here, exponential is defined on all x. अब पता है बच्चे क्या बोलेंगे? नहीं भैया, x greater than 0. I'm not saying this. Understand the point. Exponential function is positive. I'm not saying x is positive. x तो देखो ना, आंखों से देखो दोनों साइड. x कोई भी ऐसा पॉइंट दिख रहा है क्या x का जिसके लिए आपके फंक्शन का प्लॉट नहीं करा जा सकता? दिस इज योर x एक्सिस. सी योर फंक्शन इज गोइंग फ्रॉम हियर टू कहां तक जा रहा है देखो. तो मुझे एक पॉइंट ऐसा बता दो x एक्सिस पे जहां फंक्शन को नहीं. यू गिव मी x, आई विल गिव यू y. यू गिव मी x, आई विल गिव यू y. यू गिव मी x, आई विल गिव यू y. Is that clear? So your function is defined for all x belongs to R. This is a real valued function whose domain is all real. No doubt, exponential in general, like here it was e की power minus x, is always positive. Whether it is e की power minus x, whether it is e की power plus x, it is always positive. Always positive means the graph will always lie above the x-axis. So what would be the domain of the function e की power minus x square? The domain would be all real R. So I'll make the graph for all real x. Is that clear? अभी तक किसी को दिक्कत आ रही है तो please let me know. Is that clear? भरत समझ में आ रहा है? ऊपर से जा रहा है? हाँ जी सर, क्लियर। कल्पना को आ रहा है? हाँ भैया। कृति को आ रहा है? ये सुनील? यस सर। ओके, मोनिका को आ रहा है? हाँ जी भैया। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज. अब देखो, अब हम क्या पता करेंगे नेक्स्ट. asymptotes, so you can see that yes, your function is asymptotic to x-axis. This is very much indeed clear. See, as your function is approaching towards like as your x is increasing and going towards infinity, your e की power minus x square is e की power minus x. I have to make the graph of e की power minus x square, but certainly this is how it is going to be. You can see that as x tends to infinity, your e की power minus x square also tends to 0. So obviously it is going to resemble a sort of this plot only, but understand that it is going towards 0. So you can see that your function is having a horizontal asymptote, and that horizontal asymptote is y equal to 0. So y equal to 0 is that horizontal asymptote which your function is going to approach. Now let us try to do the bigger thing, the best thing that I taught you. That was, let us try to find how your function's derivatives and second derivatives behave.
So this is what I'm making so that it eases your life. Okay. So this is what I'm going to do. Okay. So this is your f dash. Let's say this is your second dash. And let us first find what will be the values of x. Okay. Okay. That we are going to find. So let us first find where your f dash x is greater than 0. Let us first find where your f dash x is greater than 0. So e to power minus x square derivative d by dx would be greater than 0 when? That we have to find. This will be greater than 0 if minus 2x e to power minus x square is greater than 0, the derivative. So derivative of e to power minus x square is minus 2x e to power minus x square. Where it will be greater than 0? It will be greater than 0 if x is less than 0. This is first thing. And f dash x is less than 0 if your d by dx e to power minus x square is less than 0. It is the case only if your x is greater than 0. Is that clear or not? यहाँ तक समझ में आया? And how would your second derivative be defined as? So second derivative will be d by dx of, इसको differentiate करेंगे minus 2x e की power minus x square. करो इसको differentiate. What will be the derivative? This will be minus 2x. The derivative of x is 1. This will be like e की power minus x square. And again, the derivative would be minus 2x square e की power minus x square. So you can take e की power minus x square as common constant out, as common out. This will be 1 minus 2x square. Is that clear? Is that not clear? And two inequalities I'm writing it here so that तुमको दिक्कत ना है. यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं. So if I'll be writing x square minus a square less than 0, the answer to this would be x lying between minus a to a. And if I'm writing x square minus a square greater than 0, then it means x lies between minus infinity comma minus a union a comma infinity. This is something that you have to remember because otherwise things would be too many things to explain. Okay, so this is something that I'm expecting you to just remember. Okay, now if I'm saying my second derivative is positive, so where your second derivative would be positive, that one needs to check. I hope the derivative is fine. I hope the derivative is fine. You just check the derivative, otherwise things will get wrong. I mean, वहां पे फिर दिक्कत आएगी. So if I say that my second derivative is positive, it implies what? It implies this is positive, forget about this. This is positive, forget about it. It implies what? It implies 2x square minus 1 should be positive. Is that clear or not clear? So this is positive. Take this negative inside. This will be 2x square minus 1. 2 is positive. So overall, if f double dash x is positive, it implies that 2x square minus 1 should be positive. It implies x should lie between minus infinity comma minus 1 upon root 2 union 1 upon root 2 comma infinity. कंफ्यूज मत होना. इस 2 को यहां रख दो. इस a स्क्वायर को लिखो 1 upon root 2 का स्क्वायर. इस 2 को नीचे डालो. Put place 2 like divided by 2. This will be x square minus 1 by 2. Write 1 by 2 as 1 by root 2 का whole square. And if I'm saying that my first function's second derivative is less than 0, it implies your 2x square minus 1 should be less than 0. It implies your x square minus 1 by 2 should be less than 0. It implies your x should lie between minus 1 upon root 2 comma 1. Is that clear? Now, there are 4 things to see. You see that your function is increasing for all x less than 0, your function is decreasing for all x greater than 0, and then there are things related to second derivatives as well. Okay, so I'll make a sort of table here. From minus infinity, I'm writing from minus infinity to minus 1 upon root 2 here. Okay, then I will write minus 1 upon root 2 to 0 here. ये सब बच्चों जैसा इसलिए करो so that you don't कहीं कहीं गलती नहीं कर दो तुम लोग. 0 comma 1 upon root 2 और लास्ट आ रहा है 1 upon root 2 comma infinity. Is that clear? Now see, मुझे ध्यान से बताना. माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1 upon root 2. x नेगेटिव है. x जब भी नेगेटिव होगा फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा. सो आई विल राइट पॉजिटिव हियर. I'll write positive here. I'll write negative here. I'll write negative. Is that clear or is that not clear? F dash x is greater than 0 for all x less than 0. F dash x is less than 0 for all x greater than 0. So for all x greater than 0, function first derivative is negative. Function
first derivative is positive for all x less than 0. x less than 0 पे देखो minus infinity comma minus 1 upon root 2 minus 1 upon root 2 comma 0. Your function second derivative is first derivative is negative. For all x less than 0, your function's first derivative is positive. Is that clear or is that not clear? ये चीज समझ में आई नहीं आई? हाँ या ना तो बोलो कोई, कहाँ चले गए सब? अल्पना को समझ में आया? हाँ भैया हाँ। भरत, कृति, मोनिका, फटाफट। सर हाँ बोलो बेटा। सर ये डबल डेरिवेटिव आपने इक्वेट मतलब ये 1 - 2x वाली टर्म को क्यों हमने देखा ग्रेटर देन देखो 0 एंड e लेस की देन पावर 0? माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, हाँ जी। इसको भूल जाओ। 2 हमेशा पॉजिटिव होता है, इसको भूल जाओ। अब बच्चा पॉजिटिव कहाँ से आएगा? यहीं से तो आएगा। देखो अगर सर मैं कह बट रहा हूँ कोई किसी चीज, भी वैल्यू, किसी भी x की वैल्यू के लिए f डैश f डबल डैश x हमेशा पॉजिटिव है ना इस फंक्शन में तो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। देखो कोई चीज पॉजिटिव कब होगी? एक आपके पास ब्रैकेट है 2e⁻x² मानता हूँ, इसको एक साथ लिख लो, और ये नेगेटिव को अंदर लेके चला गया 2x² माइनस। अगर मैं कह रहा हूँ कि f डबल डैश x पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है? ये पॉजिटिव हो, ये पॉजिटिव हो, या फिर ये नेगेटिव हो और ये नेगेटिव, यही हुई पॉसिबिलिटी। हाँ जी सर। ये नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, तो भूल जाओ इस पॉसिबिलिटी को, क्योंकि 2e⁻ हाँ जी। माइनस एक्स स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव था, तो ये तो भूल ही जाओ। इसका मतलब क्या है? इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा ना। सो बॉटम लाइन इज दैट 2x² माइनस 1 अगर पॉजिटिव है, देन f डबल डैश x इज पॉजिटिव। अदरवाइज हाँ इफ जी यू सर। रियली वांट टू राइट द टोटल सोल्यूशन, तब ये कहोगे कि ये हर रियल आर के लिए ट्रू है, और ये किसके लिए ट्रू है? इसके लिए इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन वापस ये है। सो दैट इज व्हाई आई वाज नॉट गेटिंग इनटू ऑल दोस थिंग्स, बट अंडरस्टैंड द पॉइंट कि ये अगर पॉजिटिव थ्रू आउट है, तो पॉजिटिव या नेगेटिव यहीं से तो चेक करना रहेगा हमको। इफ दिस इज हाँ जी नेगेटिव, सर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये चीज समझ में आई कि नहीं? यस सर। ओके ओके। सो नाउ अंडरस्टैंड द पॉइंट जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सेकेंड डेरिवेटिव पे चलते हैं। सो देखो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1/√2, माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस 1/√2, माइनस 1/√2, योर सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। माइनस 1/√2 कॉमा जीरो, ये कहाँ जाएगा? माइनस 1/√2 कॉमा जीरो इसमें आएगा, समझ रहे हो? माइनस 1/√2 कॉमा जीरो। हियर योर सेकेंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव 1। फिर आएगा 0,1/√2। 0,1/√2 कहाँ आ रहा? देखो ये रहा, यहीं पे तो आएगा 0,1/√2। यहाँ पर सेकेंड डेरिवेटिव क्या है? अगेन नेगेटिव, एंड 1/√2 कॉमा इन्फिनिटी, और सेकेंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव हियर। इज दैट क्लियर और इज दैट नॉट क्लियर? यहां तक समझ में आया या नहीं है? बिकॉज अदरवाइज ग्राफ नहीं बन पाएगा हमसे। तो हम क्या करते हैं, व्हाट आई विल डू, आई कीप ऑन शफलिंग, डोंट वरी अबाउट इट। ये मैंने प्लॉट किया, थोड़ा गंदा ही प्लॉट हो गया है, पर अब कुछ नहीं हो सकता। आप करते हैं इसको अच्छे से, बनाते हैं, टाइम में हमारे हाथ में तो। बट दिस इज द लास्ट थिंग। ओवरऑल आई विल कीप, जब जब भी मैं ग्राफ बनाऊंगा, जब जब भी मैं कुछ पढ़ाऊंगा तुमको आगे, मैकेनिक्स या क्वांटम मैकेनिक्स या कुछ भी, तो आई कीप ऑन मेकिंग ग्राफ्स, तो डोंट वरी अबाउट इट। इसकी प्रैक्टिस होती रहेगी। सो डोंट थिंक इसकी कहीं प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बस जो मैं बोल रहा हूँ उतना याद रखो। सो दैट विल हेल्प यू आउट एनीवे, ठीक है? अब देखो व्हाट आई विल मेक, आई विल जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस आई एम राइटिंग दीज पॉइंट्स। ये एग्जाम में मत करना, या फिर कहीं पर भी दिखाने की कोई जरूरत नहीं होती, बट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। Okay, just for your convenience I'm doing this. Okay, is that clear? Now see, यहाँ पे हम लिख भी देते हैं उस चीज को जो हम कर रहे थे। देखो माइनस इन्फिनिटी कॉमा माइनस वन, इसको उठा ही लाएंगे। माइनस 1 माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1/√2, your function second derivative was positive, your function's first derivative was again positive, I think। देखो ध्यान से, माइनस इन्फिनिटी कॉमा -1/√2, तो दोनों पॉजिटिव है। ओके, -1/√2 कॉमा 0, your function's second derivative is negative, however your function's first derivative is positive. 0 comma 1/√2, your function's first derivative is negative, and your function's second derivative is also negative. And 1/√2 comma infinity, your function's second derivative is positive, and function's first derivative is negative. Is that clear? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है क्या? ये चीज तो वही है जो मैंने ऊपर टेबल में लिखी, मैंने यहाँ लिख दी, सो दैट अभी जब ग्राफ बनाए तो एटलीस्ट मेरे को बार बार ऊपर नीचे ये सब नहीं करना पड़े। इज दैट क्लियर?
हाँ या ना तो बोलो कोई। इज दैट क्लियर? यस यस सर। सर। ओके। नाउ देखो, माइनस इन्फिनिटी पे फंक्शन कैसा बिहेव कर रहा था, अंडरस्टैंड। टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी फंक्शन वाज अप्रोचिंग जीरो ओनली। सो देखो, ध्यान से देखो, एज योर फंक्शन वाज गोइंग टुवर्ड्स माइनस इन्फिनिटी, योर फंक्शन वाज अप्रोचिंग जीरो। इज दैट क्लियर? And as your function was approaching towards infinity, again, as your x was approaching towards plus infinity, your function was approaching zero. Is that clear? ये मैंने सिर्फ तुमको एक टेंडेंसीज बता दी कि जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ भागेगा x, function would move towards zero, and as x goes towards minus infinity, your function would go towards minus, would go towards zero. Is that clear? So as x tends to minus infinity, your f is tending to zero, and as x tends to infinity, your function is tending towards zero. Is that clear? यहाँ तक समझ में आई बात? अब ध्यान से देखते हैं, फंक्शन माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/√2 कैसा बिहेव कर रहा है। माइनस इंफिनिटी से लेकर -1/√2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। इज दैट क्लियर? फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। ग्राफ का हाथ कैसा चलना चाहिए? इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ऐसा चलना चाहिए हाथ, याद करो। इज दैट क्लियर? फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, ऐसे सिखाया था हाथ चलाना। फंक्शन इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, दिस इज हाउ योर हैंड शुड मूव। From -1/√2 to 0, function is increasing at a decreasing rate. Function is increasing at a decreasing rate. हाथ ऐसा चलना चाहिए। Increasing at a decreasing rate. Is that clear? Increasing at a decreasing rate. Increasing at an increasing rate. Increasing but at a decreasing rate. Is that clear? Increasing but at a decreasing rate. हाथ ऐसा चलना चाहिए। चला हाथ ऐसा। यहाँ पे क्या था, 0,1, याद करो। Function is again from 0 to 1/√2 is decreasing at a decreasing rate. देखो लास्ट वाला ग्राफ कहाँ गया? Decreasing at a decreasing rate, हाथ ऐसा चलना चाहिए। Okay, the last one. So function is decreasing at a decreasing rate. So हाथ ऐसा चलना चाहिए, decreasing at a decreasing rate। 1/√2 तो कहाँ गए? अब 1/√2 से क्या होगा? 1/√2 से infinity, 1/√2 से infinity, you can see that your function is decreasing at an increasing rate, decreasing at an increasing rate, decreasing at an increasing। ओके, थोड़ा सा मतलब बनाने में हल्का फुल्का ऐसा तो चलेगा, बट ओवरऑल अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर फंक्शन वुड लुक लाइक दिस। इज दैट क्लियर और इज दैट नॉट क्लियर? ठीक है, थोड़ा ज्यादा ऐसा दिख रहा है, पर ओवरऑल आर यू गेटिंग माय पॉइंट? किसी को नहीं समझ में आया तो प्लीज पूछ लो। तो गंदा दिखने में गंदा दिख रहा है, बाकी ओवरऑल इट इज द सेम, दिस इज हाउ इट इज स्ट्रॉन्ग। इज दैट क्लियर और इज दैट नॉट क्लियर? कोई हाँ ना तो बोल दो। क्लियर भैया। ओके, तो इस तरीके से बनाना, नहीं तो हाथ हाथ ऐसे चलाना है जैसा मैं बोल रहा हूँ, है ना। तो अब आई डोंट नो, मतलब समझ रहे हो, तो दिस इज व्हाट इज, मतलब ये थोड़ा मैं ब्रॉड बना दिया। बाकी गॉसियन कर्व कैसा दिखता है? ऐसे ही दिखता है, यूं जाएगा, एंड देन इट विल बी लाइक दिस, एंड देन यू विल फाइंड दिस, एंड देन यू विल फाइंड दिस। दिस इज व्हाट इज। ओके, इज दैट क्लियर? सो दिस इज लाइक मोस्ट बेसिक कर्व फ्रॉम विच यू कैन लर्न एवरीथिंग। सो देखो, हाथ चलाना, कर्व स्केचिंग करने का मतलब यही है, यू शुड अंडरस्टैंड हाउ योर डेरिवेटिव्स आर बिहेविंग। सर हाँ बेटा बोलो। सर एक डाउट है। पूछो। जो सर सेकंड वाला केस है उसमें जो इंक्रीजिंग एट ए डिक्रीजिंग रेट है, इंक्रीजिंग एट अ डिक्रीजिंग रेट, हाँ। सर इसमें अगर हम एक्स की तरफ मतलब इंक्रीजिंग एक्स की तरफ अप्रोच करेंगे तो टैन थीटा तो डिक्रीज कर रहा है ना सर। वापस बोलो, क्या बोल रहे हो, ये कह रहे हो? यस सर। तो देखो, टेन थीटा ये रहा, टेन थीटा ये रहा, टेन थीटा जीरो की तरफ जा रहा है बिल्कुल ही, ठीक है। तो टेन थीटा डिक्रीज कर रहा है, जी। टेन तो सर थीटा डेरिव इसका मतलब डेरिवेटिव डिक्रीज। डिक्रीज कर रहा है, इसका मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग फंक्शन है। हाँ जी सर। फर्स्ट डेरिवेटिव डिक्रीजिंग मतलब एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो होना चाहिए, जो कि आ रहा है -1 अपॉन लेकिन रूट। सर सेकंड केस में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव इंक्रीजिंग किया हुआ ना ग्रेटर देन जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव तो हाँ सही है ना, एफ डैश एक्स तो पॉजिटिव ही है ना बेटा। एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने वाला, टेन थीटा तो पॉजिटिव है, टेन थीटा खुद पॉजिटिव है, टेन थीटा खुद घट रहा है।
समझ लो, देयर आर टू थिंग्स, अगेन आई एम सेइंग देयर आर टू थिंग्स, अंडरस्टैंड। tan थीटा तो पॉजिटिव ही है, tan थीटा पॉजिटिव होने का मतलब f डैश x तो पॉजिटिव ही है। देखो दो चीजें, एक तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन और एक ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ tan थीटा, दो अलग अलग चीजें। रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन इज गवर्न्ड बाय tan थीटा इटसेल्फ। tan थीटा इटसेल्फ, सी tan थीटा कैसा पॉजिटिव ही तो है, थीटा अगर अक्यूट है तो tan थीटा तो पॉजिटिव ही आएगा। tan थीटा क्योंकि पॉजिटिव है तो f डैश तो पॉजिटिव ही होगा ना। अब बात हो रही है रेट ऑफ चेंज ऑफ tan थीटा की, तो हम देख रहे हैं कि tan थीटा घट रहा है। tan थीटा घट रहा है मींस व्हाट, फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव घट रहा है। फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव घटने का मतलब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव आना चाहिए, जो कि आ रहा है -1/√2, 0, या सेकंड डेरिवेटिव इज नेगेटिव, your फर्स्ट डेरिवेटिव इज पॉजिटिव। शुड आई, अभी समझ में आया नहीं आया? हाँ जी सर। है ना, वो एक्चुअली मैं बार बार वही जब बोल भी रहा था तब भी मैं कह रहा हूँ, दो चीजें होती हैं। अब जल्दीबाजी में क्या होता है, आप करोगे क्या, यही बोलोगे फंक्शन इंक्रीजिंग मींस फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव होना, फंक्शन का डेरिवेटिव इंक्रीजिंग होने का मतलब फंक्शन के सेकंड डेरिवेटिव का पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? तो दिस इज हाउ इट इज। सो मतलब ओवरऑल अंडरस्टैंड, ये चार चीजें अगर फंडामेंट मतलब तुम्हें समझ में आ रही हैं, ऑब्वियसली आई एम मेकिंग दीज ग्राफ्स ओनली व्हेन योर फर्स्ट सेकंड डेरिवेटिव इज डिफाइंड, सो वो आर्ग्यूमेंट नहीं चलेगा दैट। So for example, what is the difference between these two graphs? So see, if you make e की power minus mod x, can you make this graph? And what is the difference between e की power minus mod x and e की power minus x square? Both of them are even functions. Both of them are even function. But what will happen? तो इसको मैं बनाने का इजी तरीका सिखाता हूँ। देखो e की पावर माइनस मॉड x है ना, व्हाट इज मॉड x, पहले वो समझते हैं। मॉड x इज सिंपली x if x is greater than 0, it is simply minus x if x is less than 0. ओके, एक काम करते हैं, एक ग्राफ में से प्लॉट कर रहा हूँ e की पावर x का। दिस इज हाउ यार e की पावर x इज ड्रॉन। और एक में प्लॉट कर रहा हूँ सिर्फ e की पावर माइनस x का। अब देखो e की पावर माइनस मॉड x मींस व्हाट, e की पावर माइनस मॉड x मींस it says that it will be e की power minus x for all x less than 0, and it will be e की power x for all x greater than 0. Sorry, no, minus mod x, no. So it will be e की power minus x for all x greater than 0, and it will be e की power x for all x less than 0, because all x less than 0 mod x will be minus x. This is what it is. So x less than 0 पे, x less than 0 पे just plot the graph of e की power x. x less than 0 पे just plot the graph of e की power x. Okay, and x greater than 0 पे just plot the graph of e की power minus x. This is what it is. अब इसमें और इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे there is a sharp s, this is non differentiable at 0. rather if you see that e की power minus x square it was smooth, बस ऐसा ही ऐसे चलेगा, then you have to play with the concavity slightly, यूं जाएगा, and then again, sorry, then again you have to do this way and then again this way. So you see that this is smooth, and you can see the derivative otherwise also from the basic standard 12th definition also, limit 0 f of 0 plus h minus f of 0 divided by h, that also you can see, but you can see that this is a smooth, overall smooth along on at x equal to 0. But here there is a cusp, this is non-differentiable at x equal to 0, that is clearly seen. You can see that at x equal to 0, if you see the slope here and slope here, the slopes are like here, if you see the slope is positive, here if you see the slope is negative, here you see that slopes are like, you'll find that slope would be 0. That I'm leaving it for you to find that, but overall understand that in the vicinity of 0, here your slope would be positive, here your slope would be negative, that is your derivative is changing its sign. If derivative is changing sign, then it will not help. So your left hand derivative is negative, your right hand derivative is positive. So e की power minus x would be non-differentiable at x equal to 0. So compare both of these graphs. I think this was asked in my examination itself. Graph, there were two questions, like there was a function given to you, f of x was given e की power minus x, and another function gx was given as e की power minus x square, and it was told that whether the function is continuous, differentiable, and all those things were asked. It was asked in GATE 2015 itself. So you just remember these, I mean, you just understand all these things. Is that clear to you, or is that not clear? है ना, ये थोड़ा बड़ा बना दिया, मतलब ब्रॉड बना दिया, बट दिस इज नॉट इट वुड लाइक, बट मैं समझाने के लिए लाइक फ्रॉम यहाँ से यहाँ तक सोचो ना, -1/√2 से लेकर 0 के बीच में जगह कितनी बचेगी, कम बचेगी।
So it will be increasing at an increasing rate at a very long interval, then it will increase at a decreasing rate for a very short interval. So obviously this will look like this. So it will keep on increasing for a longer interval, and then for shorter interval it will behave this way. Otherwise, this is how it is. So मतलब plot तो ऐसा बनेगा, but ये थोड़ा plateau जैसा बन गया, but I cannot help it. But understand the point what I want to mention. Is that clear? Just keep these things in mind. You will be able to solve at least any of your problem that comes in examination. And all other things needs to be seen. For example, other plots where you have some difficult functions and all those things we are going to see as we go along. But overall, if you keep these things in mind, you will be able to do most of the questions in your exam and otherwise also for physics in general. And what is my suggestion? You just try to, whenever you study classical mechanics, or at least if you teach some standard 11 child, try, because उनके वहाँ functions इस तरीके के मिल जाएंगे. Here we have some Dirac delta function, then Laplace, Green's function, all sort of difficult functions at MSc level. But at BSc or at least 11, 12 standard level, you will have some very simple functions. And whenever you try to solve a problem for a child, try to make these plots along with that, so that he also understands or she also understands from the graph perspective, and your curve sketching would be improved. So this is the only thing that you can do. There's no other way out. Okay, and this is what I have done in my life, so that is what I'm teaching you. Okay, is that clear or is that not clear? So these all points you have to keep in mind. I hope I've been able to explain. Okay, is that clear? So for people who have for MSc people, I would insist that you try to see all the lectures on complex analysis and Green's function. So next we are going to do are the previous year problem. So at least if you are giving the June attempt, then it will be good for you. So if you just see the complex analysis lecture, we are going to do all the previous year question in one lecture, and in one lecture all the previous year question on Green's function and Dirac delta function. This is what I will be doing the next, so that finishes off our previous year question analysis, discussions and all those things. भरत समझ में आ गया? हाँ जी सर. Okay. And I have recorded a separate lecture for your doubt. Okay, but again I'm going to re-record a lecture so that that doubts also goes away. So I've recorded a special lecture that is called as like Introduction to Laplace's Equation in Spherical Coordinates, Griffith treatment. So that I have done. Yes, sir. But another lecture again I'm going to do for the certain things that we've done wrong in that particular lecture. So that I'll re-record it all over. I'll not re-record it, I'll record a separate lecture. Okay. So anybody has got any doubt, anything to say? You have 2 minutes around. कृति कुछ पूछना बेटा? सर वो मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो जब से मैंने ज्वाइन किया तब से तो मुझे समझ में आ गया है. चलो बढ़िया. Okay, so हम लोग next अभी यही करेंगे. Okay, so next we are going to do Green's function. So this is next, our target is to do P by Qs on complex analysis and Green's function and Dirac delta function. So kindly revisit these lectures so that you'll be able to understand all these P by Qs. Okay, till then Okay, I'll meet you tomorrow. Okay. Yes, thank you.